Okay, guys, welcome. Today we have to start the math. Math means Manual of Accounting Principle. So इसमें हमारे पास टोटल 7 यूनिट भी कह सकते हैं सेक्शन है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन लेट मी शो यू, इसको हम स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज overview means the purpose, scope of this manual, and then we move to the other section like accounting concept, accounting policies. Now as you see here, this is the first section, which is the purpose and the scope of the manual. And after that we have some other option section. We will also study that one. We'll discuss accounting concept. You see here. इसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट आएगा वो है accounting policies, and then you will have organization of the financial accounting, organization of financial and accounting responsibility, and all these stuff. And at the last you will have the schedule 1 that will be related to self-accounting entities, and the schedule 2 that will related to the exempt entity. We will discuss these all stuff one by one, but today we will discuss the first section, that is just the overview and purpose and scope of the manual. Okay, in this lecture जिसमें हम purpose of the manual, structure of the manual को भी discuss करेंगे, authority, applicability and distribution and maintenance of the manual. One by one we will discuss. Okay, first thing you have to understand, what does we mean by the purpose? Purpose का क्या मतलब? Purpose means why the map exists. Why the map exists? What is the purpose of this map? Manual of Accounting Principle. And then you have scope. Scope का मतलब means that who and what it covers. So map को study करने से पहले you have to understand that why we have this map, and what are the areas and to whom it concern, what are the people, what are the officers. We have to discuss all these things. So the purpose, जिसको हम आप गोल्स कह सकते हैं कि द गोल ऑफ द मैप, लाइक गोल्स क्या हो सकता है, इसका मैप का गोल क्या हो सकता है, इस रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सो इट्स मींस दैट मैप का असल जो गोल है वो है इंश्योरिंग क्लियर एंड ऑनेस्ट अकाउंटिंग. आप ये भी कह सकते हैं कि इसका गोल है इंश्योरिंग क्लियर and honest accounting, right? So this is the purpose of this map. Now if we talk about the scope में आप ये कह सकते हैं कि cover all government levels. इसमें आपके पास फेडरल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, plus other departments, department that handle their own accounts. So ये इसका scope है, ठीक है. अच्छा, इसकी this is mandatory because it's based on the article 170. So we have to discuss all these things one by one. And I have just give the flavor कि इसका हमारे पास जो मेन थीम है या इसका स्कोप है वो क्या है. अच्छा, let's move on. We have to okay, here purpose को हम डिस्कस करेंगे one by word because this is the open book exam and you will be appeared for the open exam. So open book exam, so you have to study these things one by one. Clear? Okay, just a minute.
here. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है पर्पस ऑफ द मैनुअल, पर्पस ऑफ द मैनुअल। अच्छा, अगर हम जनरल टर्म में बात करें पर्पस की, सो जनरल आप ये कह सकते हैं कि मैप में आपके पास स्टैंडर्ड, इसमें एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल्स है, एंड दीज रूल्स आर फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग। ओके, दीज रूल्स इज फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट अकाउंटिंग है उनके लिए रूल्स किसने दी है? मैप ने दी। सो द मैप सेट स्टैंडर्ड रूल्स फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन पाकिस्तान। द फर्स्ट थिंग इज दिस इज द जनरल वन। सेकंड थिंग, इसका जो पर्पस है वो ये कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं वो ये मैप आपको श्योर कर देता है कि द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर क्लियर, द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर क्लियर, ऑनेस्ट, और ये सेम फॉर एवरीवन। सो दिस इज द सेकंड पर्पस। द थर्ड पर्पस ये कि जो लोग होते हैं, पीपल, उनको हेल्प आउट करता है that to ensure their trust, they make sure that the money, I'll say government money management is efficient and they are working, they are properly using the people money. So it helps people trust the government money management and make better decisions. So these are the general purpose of this manual. Now let's discuss in a specific way that the purpose of this manual. The purpose of this manual. So the purpose of this manual is set out accounting principles to be used in accounting for the transaction of centralized and self-accounting entity within the control of the federal and provincial government, and exclude exempt entity as defined in the Schedule 2 of this manual. So मैंने आपको बताया कि Schedule 2 हमारे पास इसके जो end of this documents you will see as a Schedule 2, and that is related to exempt entity. So the purpose of this manual, इसका purpose क्या है? The map provide standard rules for recording money transaction. इसका मतलब हुआ कि ये आपको प्रोवाइड कर देता है standard rules, and these rules is for what? For recording and accounting. You may say like accounting money transaction. अच्छा, ये मनी ट्रांजेक्शन किसकी? आपके पास दो एंटिटी होंगी, एक होती है सेंट्रलाइज एंटिटीज, अकाउंटिंग एंटिटीज, एंड द सेकंड वन इज सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज. सो may provide standard rules for recording money transaction of whom? Centralized accounting entities. Centralized accounting entity का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की वो यूनिट जहां पे accounting manage किया जाता है by the central office like accountant general office. So we will say that government units where accounting is managed by the central office like the accountant general office. So we call that sort of entity is centralized accounting entity. ओके, जहां पे एक सेंट्रल यूनिट होता है, गवर्नमेंट की वो यूनिट जहां पे उनकी जो अकाउंटिंग है वो एक सेंट्रल ऑफिस उसको मैनेज करता हो, then we call that type of entity is centralized accounting entity. On the other hand, we have another entity जिसको हम सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी कहते हैं. सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट that handle their own accounts like central certain ministries. So उसको हम कहते हैं सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी. सेल्फ का मतलब यही है कि they are handling their own account. So we call that as the self accounting entity. अच्छा, इसमें एग्जाम एंटिटी मैप से एक्सक्लूड है जो स्केड्यूल 2 में आपके पास होगा. some organization listed in schedule 2 of the map specific public corporation, so they don't follow these rules. Okay, so the purpose of the manual is कि ये रूल्स सेट करते हैं, सेट आउट
the accounting principles, set out the accounting rules for whom, for the money transaction. For the money transaction, they set out the rules, and those rules are for the centralized accounting entities and for self accounting entities. Okay, they जो मैप है वो exclude करता है, exempt है किस चीज से, मैप की रूल से कौन एग्जाम्प्ट है, जो स्केड्यूल 2 में जो एंटिटी दी गई है वो एग्जाम्प्टेड एंटिटी है फ्रॉम द मैप. नाउ outlines, the second purpose is outlines the roles and accountability of specified organization and officers of the centralized accounting and self accounting. इसका मतलब ये हुआ कि ये and explain the role and the responsibility of the organization and officers, like you will have the principal accounting officer, which is the senior executive. Okay, district account officer, we call that is district account officer, जिसको हम district account officer DAO, district account officer. ठीक है, ये आपको ensure करा देता है this map that the roles and the responsibility of the organization and officers, like which I have told you, the PO, to ensure they manage money properly and are accountable. So ये जो लोग है, जो PO है, ये properly money को manage भी करता है, and plus they are accountable for all the spending they are doing. Okay, so the main purpose which you have to be concerned with the purpose is that map आपके पास रूल को सेट कर देते हैं किसके लिए, आपकी जो सेंट्रलाइज्ड एंड सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी से. इसके अलावा एग्जाम एंटिटी पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, वो एग्जाम है और एग्जाम एंटिटी आपको स्केड्यूल 2 में मिलेगी. इसके अलावा ये आपको रूल्स एंड अकाउंटेबिलिटी की बात भी करता है स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि टीएओ एंड डीएओ. ये लोग जो भी मनी स्पेंड करते हैं तो इसका के बारे में वो अकाउंटेबल होगा. ये आपको इंश्योर कर देता है, पब्लिक को इंश्योर कर देता है कि द पीपल हु आर यूजिंग द पब्लिक मनी will be responsible and will be accountable for, and they are properly managing those money. Okay, so this is the one thing you have to be clear. Accounting principle simple ही बात है, ये example rules होते हैं for recording and reporting money transaction to keep them clear and consistent. Centralized accounting entity के बारे में मैंने आपको already बताया कि सेंट्रलाइज अकाउंटिंग एंटिटीज वो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे एक सेंट्रल यूनिट होता है, जो कि मैंने एग्जांपल में अकाउंटेंट जनरल बताया आपको, जो मनी मैटर्स की, ऑल मनी मैटर्स की रिकॉर्ड को ट्रैक करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी की बात भी हमने की, जो डिपार्टमेंट अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को खुद मैनेज करता हो, एंड दे आर जस्ट नॉट रिलाइंग ऑन द सेंट्रल ऑफिस, देन वी कॉल दैट इज self accounting entity. Clear? Okay, wait, let's move on. We have the other concept. अच्छा, इसमें ये पर्पस एंड अकाउंटेबिलिटी की बात तो हमने की. अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है, the manual will cover the principle, policy and procedure in relation to the centralized accounting entities and will only lay down the principle for the self-accounting entity, because the policy and procedure for self-accounting entities are covered by the individual rules and regulation. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि मैप्स हमें डिटेल रूल्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर देता है, बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि may provide detailed rules and policy and procedure for centralizing accounting entities only. Okay, this manual cover the principle, policy and procedure in relation to centralized accounting entities. Means MAP provides detailed rules, policies
and procedures for centralized accounting entities. ठीक है, सेंट्रलाइज अकाउंटिंग एंटिटी गवर्नमेंट की वही यूनिट होते हैं जहां पे एक सेंट्रल ऑफिस होता है और वो अपने अकाउंट सेंट्रल ऑफिस उनके अकाउंट मैनेज करता होता है. वी कॉल दैट सॉर्ट ऑफ एंटिटी एज centralized accounting entity. But for self-accounting entities, MAP just gives principle. ये उनको सिर्फ प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं, that just give or provide the principle to the self-accounting entity and not detailed policy and procedure. And the reason is because these entities follow their own specific rules and regulation. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो डिटेल रूल्स एंड प्रोसीजर एंड पॉलिसी है वो सेंट्रलाइज अकाउंट एंटिटी को प्रोवाइड करता है, एंड देन they are just providing you may say the principle only to the self-accounting entity. They are not providing the detailed policy and procedure because these entities have their own individual rules and regulation. Clear? Hope you have understand. अच्छा, principle in simple terms you say like that, a basic guideline for accounting, like how to record transaction. अगर आप एक बात करें मैचिंग कंसेप्ट है, लेट्स से मैचिंग कंसेप्ट में आपके पास है कि आपकी जो एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू के साथ मैच करनी चाहिए, देन दिस इज द प्रिंसिपल एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. ओके, नाउ फॉर सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग एंटिटी मैं उनको ये भी बताता है कि हाउ दिस ट्रांजैक्शन, हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, सो दिस इज रिकॉर्ड प्रिंसिपल. बट उनको ये भी बता देता है कि how to apply the principle, like when to recognize the expenses. इन एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करना है, मतलब है कि कैश आपने रिसीव किया, कैश आपने पे किया, उस टाइम आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है या रिकॉग्नाइज करना है. रिकॉग्निशन का मतलब ये है कि आपने रिकॉर्ड करना है, या एक्सपेंस जैसे एक्सपेंस एंकर्ड होता है देन दैट टाइम यू हैव टू रिकॉग्नाइज. सो ये पॉलिसीज इन सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग एंटिटी के लिए ये मैप प्रोवाइड करता है कि आपने मतलब ट्रांजेक्शन को किस तरह रिकॉर्ड करना है और ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, हाउ टू अप्लाई प्रिंसिपल, वो बताता है इसको सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग एंटिटी को. बट इफ यू लुक एट द अदर हैंड वी हैव द सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी, तो वहां पे सिर्फ प्रिंसिपल बताता है कि आपने हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, ये बताता है, ये नहीं बताता कि आपने कब expense को recognize करना है, when the cash is paid or when the expense is anchored. So this is the difference that when the MAP is helping the self-accounting entity and when they are providing information to they are helping with the centralized accounting entity. So this is the basic differences. Okay. अच्छा, इसके बाद बात करेंगे द मैनुअल डिफाइन द फ्रेमवर्क व्हिच अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर टू बी ट्रीटेड एंड रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी टू बी असाइंड. सो दिस इज जस्ट अबाउट द फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का मतलब है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर और द सिस्टम फॉर द अकाउंटिंग, सो वी कॉल दैट इज द फ्रेमवर्क, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स वी हैव टू मूव ऑन हियर. दिस इज द let me erase this so it will be easy for us. फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये जो डिटेल अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इसके हवाले से हम बात करेंगे ये. ओके, लुक एट हियर नाउ. ओके, नाउ 1.1.14, if you see here, detailed accounting policy and procedure are contained in the accounting policy procedure that we call as APPM. Reference should be made to the accounting policy and procedure manuals, financial reporting manuals, chart of accounts, of external, manual of external reporting requirement, determining the rules and procedure for the treatment and recording a specific transaction. अच्छा, ये जो डिटेल पॉलिसी एंड प्रोसीजर है
is in the is accounting policy and procedure manual, not in the map. इसका मतलब ये है कि आप जो मैप है उसमें आपके पास डिटेल अकाउंटिंग प्रोसीजर या पॉलिसीज नहीं है. दिस इज जस्ट अ ब्रॉड थिंग. ओके, अगर आपने डिटेल पॉलिसीज और प्रोसीजर को देखना है, then you have to go and check the accounting policy and procedure manual, right? अच्छा, accounting policy procedure manual, this is for specific transaction. You know, when you're looking for specific transaction rules, then refer to the accounting policies and procedure manual, जहां पे आपको डिटेल स्टेप फॉर अकाउंटिंग मिलेंगे. ठीक है. इसके अलावा अगर आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल को देखना है, देन वहां पे जो आपको मिलेगा रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट. एंड यू नो दीज आर द डॉक्यूमेंट व्हिच हैव referred by the map that you have to need, like chart of account and other thing. I will show you later that one. Okay, and then we have chart of account. Chart of account में list of account होते जहाँ पे names and code होते for recording the transaction. Like if you say regarding the transaction salary expense, and then there should be a names and the code of that specific transaction. इसके अलावा आपके पास है month manual of external reporting requirement. ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर आपने पब्लिक को एक कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो या कोई भी रिपोर्ट हो, जो आपने पब्लिक को शो करना है, पब्लिक को शेयर करना है या पार्लियामेंट को शेयर करना है, देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स which is mentioned, which is given in the manual of external reporting requirement. So manual of external reporting requirement is actually the guideline for report sent outside of the government, then we call that. So we have, if you're looking for these things, for specific transaction, for specific transaction rules, then you will refer to these things. The first one is accounting policy and procedure manual. The second one is FRM, then chart of account, manual of external reporting requirement, and determining the rules and procedure. Okay, so you have to see this, these stuff. Now, if you see here, I have told you that map में आपको documents दी है, that documents relevant to accounting and financial management for centralized accounting and self-accounting include. अच्छा, ये documents जो relevant है for the accounting and financial management of centralized accounting and self-accounting, वो है आपके पास 8. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the 7 documents that you will that is relevant for accounting and financial management of centralized accounting and self account. इसमें फर्स्ट नंबर पे है चार्ट ऑफ अकाउंट. चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ट ऑफ अकाउंट एक a list of account names and codes होते हैं. इसमें is a list of account names and codes. ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक लिस्ट ऑफ नेम्स एंड कोड्स होंगे, एंड वी हैव टू यूज them for the transaction. For example, you have to record the salary expense, and then there will be a name salary expense, and there's a code, then you have to follow that code, and when you are booking the transaction. Another hand, we have another document that is called delegation of financial power under the financial rules. ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स होते हैं that who can approve spending or other financial decision. So financial decision related में delegation है कि मतलब है किसको authority है, who is permitted to approve the spending or other financial decision. Financial decision related उनको proper rules होते हैं कि किस के पास रूल है कि वो कौन सी स्पेंडिंग को कर सकते या उसको अप्रूव कर सकते हैं और कौन से फाइनेंशियल डिसीजन वो ले सकता है. फॉर दैट रीजन दे हैव डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर अंडर द फाइनेंशियल रूल्स. ये एक डॉक्यूमेंट है. इसके अलावा हमारे पास है रूल्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस का यह मतलब है वर्क्स. इट्स मीन दैट गाइडलाइन ऑन हाउ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑपरेट एंड मैनेज देयर वर्क. सो रूल ऑफ बिजनेस में आपको
ऐसे गाइडलाइन मिलेंगे जहां पे वो आपको बताएगा कि डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज है, जो ऑपरेशन है, वो मतलब गवर्नमेंट किस तरह ऑपरेट कर रही है, गवर्नमेंट हाउ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑपरेट्स एंड हाउ they are managed their work. So if you are looking for the rules which is related to the operation and the management of the government work, then you will go for the rules of business. Okay. Now you have another document, that is accounting policy and procedure manual, and which I have told you that this is the detailed steps of accounting, जो डिटेल स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको हम कहाँ पे देखेंगे, उनके रूल्स हम कहाँ पे देखेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर में। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जनरल फाइनेंशियल रूल्स है, जैसे कि नाम से यो इंडिकेट्स कि जनरल का मतलब है ब्रॉड। ओके, सो these are the broad rules for managing the government monies, like budgeting and spending. So these are the these are the broad rules for the managing the government monies. Okay, like budgeting and spending. Clear? इसके अलावा हमारे पास प्रोविजनल ट्रेजरी रूल्स है, जो कि गवर्नमेंट की रूल्स होते हैं फॉर हैंडलिंग गवर्नमेंट कैश पेमेंट एंड बैंकिंग। उसको ट्रेजरी से आपको पता चलता है कि ये रिलेटेड टू द कैश payment and banking. And so the rules, if you are looking for the rules that how to handle the government cash payment and banking, then you will go to look at the treasury rules, and this is for the federal and provincial both. And the last two is the financial reporting manuals. That is financial reporting manuals, as we sample that, is related the instruction for preparing the financial reports. Financial reports की जो preparation and instruction दी हुई है, and that like financial reports का मतलब है कि आप you have balance sheets, you have income statement and so on like that. So, उस रिलेटेड जो गाइडलाइन है, जो इंस्ट्रक्शन, वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल में मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में है मैनुअल ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें गाइडलाइन होते हैं फॉर दोज रिपोर्ट विच आर टू बी आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड दो रिपोर्ट दैट आर शेयर्ड विद द पब्लिक, or you may say with the parliament. So we call that, if you are looking for the rules and regulation related that report that to be shared with the public or the parliament, then you have to look at the manual of external reporting requirement. Clear? So हमने इसमें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, हमने सेंट्रलाइज्ड अकाउंट एंटिटी के बारे में भी समझा कि वो क्या है। इसके बाद सेल्फ अकाउंट एंटिटीज के बारे में भी हमने जाना, क्योंकि यू हैव टू बिकॉज द होल मैप इज फोकस ऑन द सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग एंटिटीज, सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फॉरवर्ड्स, रूल ऑफ बिजनेस, these all things you have to be see more and more again and again. So for that reason you have to understand, right? Now let's move on. We have to discuss the structure which I have told you before, but let me show you again the structure of the manual. Manual की structure जो है वो ये मैं 3 parts में divide किया है to organize its rules and guidelines. So this manual is in 3 parts. यहाँ पे आप लोगों के पास है 3. First part of this manual is comprising section 1, and that was overview of the purpose which we are now studying. ठीक है, जिसमें आपको पर्पस इसको अब दिस मैनुअल बताया जाता है। सो 3 पार्ट से फर्स्ट पार्ट में हम पर्पस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मैनुअल, मतलब ये हो कि व्हाई द मैप एग्जिस्ट। इसके स्कोप के बारे में हम जानेंगे कि हु एंड व्हाट इट कवर्स, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस मैनुअल है वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिलेटेड है, दैट इज यूज्ड बाय द सेंट्रलाइज्ड एंड सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी एंड अपॉन व्हिच इज इन डिटेल पॉलिसी एंड प्रोसीजर कंटेंट। एंड थर्ड पार्ट में हमारे पास है सेक्शन 4 और 5 जो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस मैनुअल में आपके
एट द एंड में दो स्केड्यूल अटैच है, एक स्केड्यूल जो लिस्ट ऑफ सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी है, दूसरी है एग्जाम एंटिटी है, ठीक है। ये रीडर गाइडेंस है, इसको आप खुद ही पढ़ें, ठीक है। Let's move on. We have now we have the another topic that is authority applicabilities. This is, I think, the last one we have to discuss, and then after that we will have to finish this section, this chapter. So authorities के बारे में, authority है applicability, मतलब applicability है, distribution है, maintenance of the manual है। ये आपको बता रहा है कि इस मैनुअल की अथॉरिटी ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, और इसके मेंटेनेंस के हवाले से डिस्कशन है। दिस इज जस्ट ओवरव्यू, सो वी हैव डिस्कस दिस थिंग, ओके। अच्छा, मैप अथॉरिटी का मतलब ये है कि द मैप, ये जो मैप है, मीन जो मैनुअल है, इज इशूड टू सेट अ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स, एंड व्हाई दिस स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, यू नो, फॉर कीपिंग द accounts of the federal and the provincial government is required by the Article 170 of the Pakistan Constitution. So इसमें ये मैनुअल, इसकी अथॉरिटी क्या है? The manual is issued to set out the accounting principle and accordance with the account of federation and provinces shall be kept. ओके, जहाँ पे ये इशू करते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स। मैप में आपको स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स मिलेंगे, and these rules are for keeping the accounts of the federal government, federal government के अकाउंट को उनको रखने के लिए, and provincial government के अकाउंट्स को रखने के लिए, and these are the requirement of the 170 Constitution. This is the Article 170 of the Constitution of Pakistan. Article is the requirement of the 170 Constitution, article of the Constitution of Pakistan, Islamic Republic of Pakistan. So this is the authority. Okay, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स का मतलब ये है कि इसमें गाइडलाइन दी हुई है फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द मनी ट्रांजैक्शन. सो मींस देयर इज स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स, एंड द रूल्स मींस, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रूल्स मतलब है कि गाइडलाइन है फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग द मनी ट्रांजैक्शन. The second point we have discussed is the federal and provincial government. Federal and provincial government का मतलब है कि नेशनल एंड स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट एंड नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है, वो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट. एंड देन आर्टिकल 170 जो है वो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक हिस्सा है. आर्टिकल 170 that how which say that how the government account must be managed. गवर्नमेंट अकाउंट को किस तरह मैनेज किया जाएगा. For that reason 170 article is concerned about that how the government account must be managed. Effective date की अगर बात करें, so this is just the application, that effective date for the application of this manual is the date of the issue of the manual by the Auditor General. अच्छा, ये एक जो manual है ये Auditor General ने issue किया है, and this is based on the 170 article of the Constitution, which is the requirement of 170 article of the Constitution of Pakistan, right? So the map state being used on the date it is issued by the Auditor General of Pakistan, right? Okay, now we have the coverage. We have to discuss the coverage. Coverage means that accounting entities, we can simply say that the accounting, first you have to understand that an accounting entity is any government unit, like ministry, division, department. जो गवर्नमेंट से money, they're just getting the money from the federal or the provisional government budget and provide data to the accounting system, but is not listed in the exempt entity in the schedule 2, then we call that as accounting entity. So accounting entity की यहाँ पे definition दिया कि accounting entity is any unit of the government, ministry, division and department whose principal source of funding is the appropriation from the federal and provincial government, which means इसका मतलब ये हुआ कि they are getting money from the federal, provincial government budget, right? And if you see here, and which prepare and put to the accounting system, इसका मतलब ये कि they are providing data to the accounting system.
but they are not listed in the Schedule 2 of this manual. Manual Schedule 2 जो हाँ exempted entity दिया गया हुआ है उसमें ये listed नहीं है, that we call that is accounting entity. So accounting entity का एक specific definition ये है कि accounting entity वो गवर्नमेंट की वो यूनिट जैसा कि मिनिस्ट्री है, डिवीजन है, जो गवर्नमेंट की बजट से फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, यहाँ से ये they are just getting the money from the federal or the provincial government budget, and they are also providing data to the accounting system, and they are not listed in Schedule 2, so we call that as accounting entity. So first thing you are कि ये getting money from whom? From the federal या provincial budget. ठीक है, this is first thing. Second thing, they are inputting data to the accounting system. And the third thing is they are not listed in the Schedule 2 of this manual. So we call that as the accounting entity. 3 points आप लोगों ने याद रखनी है. The first one is they're getting this is any government unit, वो कोई भी government unit जो federal or provincial budget से they're getting money. The second thing, they are inputting the data to the accounting system. And the third thing is they are not listed in the Schedule 2 of this manual, then we call that as the accounting entity, right? Now there are two types of accounting entity. हमारे पास two types की accounting entity. The first one is centralized accounting entity and second one is self accounting entity. Centralized accounting entity के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि centralized accounting entity is any accounting entity for whom the accountant general has the prime responsibility for accounting and reporting function of that entity. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेंट्रलाइज अकाउंटिंग एंटिटी वो यूनिट है जिसका एक सेंट्रल ऑफिस अकाउंट्स मैनेज करता हो, देन वी कॉल दैट ए सेंट्रलाइज अकाउंटिंग एंटिटी. वो गवर्नमेंट यूनिट जिसका accounts एक central office manage करता हो, where a central office manage its accounts, like accountant for whom the accountant general जो manage करता हो the accounting and reporting function of that entity, then we call that a centralized accounting entity. On the other hand, we have the self accounting entity. Self accounting entity is you see here is any accounting entity for whom the principal PPAO has the prime responsibility for accounting and reporting the function, and a list of this entity is contained in Schedule 1 of this minute. अच्छा, सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी के बारे में आपको Schedule 1 में मिलेगा, ठीक है, और एग्जाम एंटिटी है वो Schedule 2 में. तो इसका मतलब हुआ है कि सेल्फ अकाउंट एंटिटी वो यूनिट है दैट मैनेज देयर ओन अकाउंट, जो अपने अकाउंट खुद मैनेज करता हो, देन वी कॉल दैट एज सेल्फ अकाउंट एंटिटी. और जिसका अकाउंट कौन मैनेज करता हो, सेंट्रल ऑफिस लाइक अकाउंटेंट जनरल मैनेज करता हो, देन वी कॉल दैट एज सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सेंट्रलाइजिंग अकाउंटिंग एंटिटी. अच्छा, ये अकाउंटेंट जनरल ये एक सीनियर ऑफिसर हु ओवरसी द अकाउंटिंग फॉर द सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, देन वी कॉल दैट इज अकाउंटेंट जनरल. अकाउंटेंट जनरल मतलब सीनियर ऑफिसर हु ओवरसी द अकाउंटिंग फॉर द सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, उसको हम कहते हैं क्या, अकाउंटेंट जनरल. अच्छा, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का मतलब है कि रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट. अकाउंटिंग and reporting means that recording the transaction and preparing the financial report, so we call accounting and reporting, right? अच्छा, अकाउंटिंग एंटिटी के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटी के बारे में भी हमने डिस्कस किया, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अभी हम एग्जाम एंटिटी की बात करें जो Schedule 2 में है, वो एग्जाम एंटिटी है जिसपे मैथ एप्लीकेबल नहीं है. द टर्म अकाउंटिंग एक्सक्लूड एग्जाम एंटिटी. अच्छा, ये यहाँ भी एक लफ्ज है, ये the term accounting entity exclude exempt entity, ठीक है. So इसका मतलब है कि all accounting entity must follow the MAP rules. MAP rule कौन फॉलो करेगा? All accounting entity, but the exempt entity जो Schedule 2 में है उसको हम does not include the term accounting. इसका मतलब ये कि the term accounting entity does not include exempt entities. Okay?
Now let's move on. We have the compliance. Let's talk about the compliance. This is the 1.3. So compliance with the manual is mandatory. और mandatory क्यों है? क्योंकि this is based on, this is the requirement of Article 170. So that is why this is mandatory for all accounting entity. Okay. So all accounting entity must follow the MAP rules. This is the simple portion. Compliance with the manual is mandatory for all accounting entity. इसका मतलब हुआ कि all accounting entity must follow the MAP rules. Okay. Now, and the event, there. Wait. And the event that a guideline in this manual conflict with other manuals, directive, or practices other than those amending this manual, the guidance in this manual will prevail. इसका क्या मतलब हुआ? देखो यहां पे ये मैनुअल है जिस मैप है, तो वो सारी रूल्स मैनुअल्स, डायरेक्टिव्स, प्रैक्टिसेस अगर क्लैश में है मैप के साथ, then map will prevail. Except those rules, those things, those manual, those directive, those practices जिसने इस मैप को अपडेट किया है, उसके अलावा जितनी भी रूल्स के साथ इसका कंट्रोडिक्शन होगा, तो मैप आपके पास जो मैप है वो प्रिवेल करेगा. मतलब ये हुआ कि मैप को फॉलो करना पड़ेगा, मैप वहां पे रूल ओवर करेगा. ठीक है. Complex का मतलब है when the rule disagree with each other. So if the map rules conflict with other manuals, directives, or practice except those that update the map rules take priority. Map rules priority पे होंगे, map rules prevail करेगा. ठीक है. Except those which update the map. Okay. Now accounting entity are not authorized to implement accounting principle in conflict with or contrary to those set out in this manual. This simple rule है कि जो आप लोग के पास accounting entity cannot use accounting rules that go against the map. Map के against accounting entity को ये परमिशन नहीं है कि वो ऐसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करे जिसका कंट्रडिक्शन हो, कंट्रैरी हो टू द मैप. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर. Here you see section 5 and 6 covering the organization of the financial accounting responsibility, financial accounting accountability, provide specific guidance as the accounting and financial management responsibility. This is all about this section 5 6 के बारे में बात कर रही है कि वहां पे आप लोगों ने जो accounting and financial responsibility है उसके हवाले से बात है कि section 5 and 6 of the MAP give specific guidance on the accounting and financial responsibility of the key organization and officer like accountant generals, the principal accounting officers. So accounting and financial responsibility का मतलब ये है कि जो the duties for managing and operating money, for reporting money, इसके हवाले से बात है. और then key organization officers की बात है जो important government unit है, officials है like accountant generals or the PO. Okay. So these are the simple things. Now let's move on. We have to look at the distribution and the maintenance and updates. इसके हवाले से बात है कि कौन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगी, मेंटेनेंस का क्या सीन है, और अपडेट के बारे में भी यहाँ पे कुछ देयर सम थिंग्स. सो वी हैव टू डिस्कस दिस, राइट. ओके. अच्छा, ये अगर आप देखें कि Auditor General of Pakistan will be responsible. Who is responsible? Auditor General of Pakistan is responsible for the initial issue of the manual of all principles. So means that the distribution is responsibility of Auditor General of Pakistan, AGP. Right? Now the maintenance update of the manual included distribution of any updates or amendment to all the principal accounting officer accounting entity. ये भी किसकी responsibility? AGP की. डिस्ट्रीब्यूशन भी एजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस भी एजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड डेफिनेटली अपडेट भी एजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. सो फॉर ऑल अकाउंटिंग एंटिटी द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर विल इंश्योर for all accounting entity the principal accounting and
principal accounting officer will ensure, अच्छा principal accounting ensure करेगा that initial copy of the manual are distributed to all the finances and account officer within accounting entity. अच्छा accounting all accounting entity के जितने भी उसके PAO है, जो senior executive है, वो ensure करेगा कि initial copy of the manual distribute हुआ है to the all finances and account officer. फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर को डिस्ट्रीब्यूट है विद इन द अकाउंटिंग एंट्री के अंदर जितने भी फाइनेंस ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर उनको इनकी एक कॉपी इनिशियल कॉपी ऑल सब्सिक्वेंट, अच्छा बाद में जब भी अपडेट या अमेंडमेंट होती है ऑफ द मैनुअल और डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर विद अकाउंटिंग. इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एंटिटी है, ठीक है. अकाउंटिंग एंटिटी में आपके पास जो पीओ है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि उनके जो फाइनेंस ऑफिसर है या अकाउंट ऑफिसर है उनको इस मैप की इनिशियल कॉपी भी मिली एंड बाद में अगर कोई भी सब्सिक्वेंट अपडेशन या कोई भी अमेंडमेंट होती है उसके हवाले से भी इनको मतलब दे आर जस्ट आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड देयर टू द कंसर्न ऑफिसर, राइट. अच्छा ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस की बात भी हमने डिस्कस की है. अच्छा अभी हमने डिस्कस करना है एक्सप्लेनेटरी नोट. एक्सप्लेनेटरी नोट यहाँ पे हमें लीगल स्टैट्यूटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द कंप्लायंस की बात करेंगे कि कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव एंड प्रिंसिपल कंटेन इन दिस मैनुअल आर मैंडेटरी. और मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंडेटरी क्यों है, बिकॉज content this manual has been issued under the Pakistan Audit and Accounts Order 1953. And the Pakistan Account and Audit provided Auditor General will be responsible for keeping the accounts of the federation of each province and other than certain specified entity, and the order is issued subsequent under the Article 1 of the Constitution of Pakistan, which stated account of the federation and provinces shall be kept in such form and in accordance with such a principle and method as the Auditor General may, with approval of the President, prescribe. So इसका मतलब ये है कि this map is how to be followed, because this is following the rules and principles in the map is mandatory, and the reason is because they are issued under the Pakistan Audit and Accounts Order 1973. So rules and principle जो guidelines map में दी गई है about recording and the reporting monies transaction, and mandatory का मतलब है कि must be followed, no choice to ignore, this is must be followed. Like ये mandatory का मतलब ये है कि there is no choice for you to ignore, you have to follow, right, जो compulsory होता है. So this is all about the overview of section 1, and inshallah in the next lecture we will move to the another accounting concept. We'll discuss this accounting concept in the next lecture. Okay, thank you for watching.